आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया अभियान अपने दर्शकों के लिए खास कार्यक्रम लाया है, जिसमें सभी के स्वास्थ्य को लेकर संपूर्ण बातचीत का पूरा विवरण है। तो ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं अंबिका के पास और सुनते हैं पूरी बातचीत और उसका विवरण। आज 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है और बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन में जो हमारा लक्ष्य है संपूर्ण स्वास्थ्य का, वो तब तक पूरा नहीं होगा या हासिल नहीं होगा जब तक हम मदर्स और चिल्ड्रन यानी कि माँओं और बच्चों पर खास ध्यान ना दें। इस बारे में हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद ने महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी से बात की। I want to begin by asking you about the maternal mortality rate and the infant mortality rate. Now, the infant mortality rate in the last 8 years, drastic change from 37 per thousand in 2015 to 30 per thousand now, the current figures. But how do we ensure, while we have made a lot of improvement there, how do we ensure better facilities for women and children? I think we have to recognize that there is a cyclic impact on a child's health, which generates for how healthy a woman is, the mother giving birth. It also has a contribution of the father's health and the genetic predisposition a child has towards a healthy future. One, that recognition needs to happen. And that is why what is the cyclic impact the government is unleashing? First, let's begin with sanitation. Not many people know that good health is dependent on access to good sanitation facilities. Washing of hands, you need access to clean water. So if you look at the Jal Jeevan mission and the Prime Minister's agenda of ensuring every home has tapped water, that is an initiative that is equally based in health as much as it is based in access to clean drinking water. The second issue is access to clean toilets. Prime Minister has built 110 million individual household toilets in the past 8 to 9 years. And when you have an open defecation policy literally supported by an administration which does not look at this very basic need of the citizen, which happened in the UPA era, that is when you perpetuate or propagate illnesses and sickness within a family confine. And that is why the second intervention, which is the building of the toilets, is equally important for a healthy living circumstance for a woman, child or the family at large. The third is access to nutrition. In the past 2.5 years, the Prime Minister has ensured that 800 million Indians get access to free food, free ration, for which money is spent by the Government of India alone. It's from the National Treasury. And the doorstep delivery of the same is also accompanied by additional nutrition support for pregnant, lactating women and children under the age of 6. I think that additional nutrition support is also intended to ensure that the day-to-day struggle of ensuring that all mouths are fed is a struggle in which the government can be of support to our citizens. Fourthly is the access to affordable medication. Now we have over 9,000 plus Jan Aushadhi Kendras in the country, which in fact have 40 products particularly highlighted only for women. Menstrual health included and hygiene included. One of them is the 1 rupee sanitary pad that the Honorable Prime Minister spoke about. So I think that on these 4 levels, nutrition, clean water, sanitation facilities, access to affordable medicine, the government has done much. Infrastructurally, the government has also ensured that over 1 lakh plus wellness centers open up in the country. Infrastructurally, now every district in our country will have a medical college. Infrastructurally, the number of AIIMS have literally gone up. But apart from that, the infrastructural support needed for district hospitals, PHC, CSCs, is also something that the government has afforded much fiscal support to. So I think that we can't be myopic enough to look at MMR or, for that matter, children's or infants' mortality from only that one perspective. For instance, we run in the Ministry of Women and Child Department the Poshan Abhiyan, which is the Prime Minister's flagship scheme for nutrition for pregnant, lactating women and children under the age of 6. We don't run it alone. It's an amalgam of 18 ministries, which includes Sports Ministry, which includes Rural Development Ministry, which includes Urban Development Ministry, which includes Jal Shakti, which includes even agriculture. So it's not an effort of one department alone.
It's a combined governmental initiative which we ensure percolates on the ground with the support, because ultimately the basic infrastructure lies with the state governments. और आप उस तरफ कदम ले रही हैं, आप और आपकी सरकार. Thank you for your time, ma'am. Thank you. Thank you. जमीनी स्तर पर महिला और बाल कल्याण अभियान तभी कामयाब होता है जब वो उसी बिरादरी की महिलाएं चलाएं। अमरावती और कोरकू की आदिवासी महिलाएं यानी कि जो कम्युनिटी न्यूट्रिशन वर्कर्स के तौर पर अपने कस्बों और समुदायों के कुपोषण हटाने की जिम्मेदारी ले रही हैं। ये गुलाबी दीदियों के नाम से जानी जाती हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में 10,000 गुलाबी दीदियां इस मुहिम में जुटी हैं कि किसी बच्चे की कुपोषण यानी कि मैल न्यूट्रिशन से मौत ना हो और हर माँ सुरक्षित और सेहतमंद गर्भ से गुजरे। तेज गर्मी है और सरिता अमरावती में अपने कस्बे धारनी में आंगनवाड़ी केंद्र जाने की तैयारी में है। सरिता उन 10,000 से ज्यादा गुलाबी दीदियों में से हैं जो आसपास के इलाकों से आई हैं और ये यहाँ की आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ मिलकर काम करती हैं। महाराष्ट्र में ये कार्यक्रम 2 जिलों में चल रहा है, नंदुरबार और अमरावती। अभी बहुत से लोगों मुझे हमें जानने लगे हैं, सरपंच हो गए, पुलिस पाटिल हो गए, वो लोगों भी जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट वाले हैं, जो गुलाबी ड्रेस वाले हैं। ग्राउंड लेवल में जो भी मीटिंग वगैरह होते हैं तो हमें बुलाते हैं वो। अक्टूबर 2018 में प्लान इंडिया ने रैकेट की बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम के तहत रीच ईच चाइल्ड या हर बच्चे तक पहुंच कार्यक्रम को लागू किया। गुलाबी दीदियां इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। हर गुलाबी दीदी अपने गांव के आसपास वाले 6 से 7 गांव में काम करती हैं। रैकेट की सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के तहत रीच ईच चाइल्ड कार्यक्रम 5 साल से कम 72,700 ऐसे बच्चों तक पहुंचा जिन्हें किसी न किसी तरह का कुपोषण था। हर दिन हम जैसे नई हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमन आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको डेली डायरी में पहले मेंटेन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में टैब में एंट्री करके शाम में अपने बीओस को देते हैं उसके डेटा। टैब में जब से आइडेंटिफाई किया है तब से उनके आधार कार्ड, उनके मोबाइल नंबर एंट्री होते हैं, उनका हाइट, उनका वेट, उनका मुआफ हम एंट्री करते हैं। जानकारी दिया कि बच्चों का अच्छा रखना, आंगनबाड़ी में लेके जाना, आंगनबाड़ी का खिचड़ी मिलता है वही खिलाना और बाहर का वाला नहीं खिलाना। बच्चों का इलाज भी किया, हमने भी इलाज किया। कुपोषण के मामले में महाराष्ट्र भारत के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है, लेकिन गुलाबी दीदियों की मौजूदगी से इतना असर पड़ा है कि अमरावती और नंदुरबार में कुपोषण से एक भी बच्चे की मौत नहीं हुई है। सरिता जैसी गुलाबी दीदियां आदिवासी समुदाय का सहारा बनकर भारत के सबसे गंभीर स्वास्थ्य मसलों का हल निकाल रही हैं।